Good morning, everyone. I think we have got our resource persons here, so let's get started. Good morning, everyone. Welcome to Insight Day 2 Faculty Development Program. It's going to be another day of learnings and discussion with an eminent person, resource person, Mr. Vikas Kumar. We have with us now. Hello, sir. Good morning, sir. Am I audible to you? Hello, can you hear me, ma'am? Yeah, I can. Yes, I can hear you now. So Mr. Vikas Kumar is the Deputy Director, Ministry of Textiles, and he will be assisted by Sobharani, Assistant Professor from the National Institute of Fashion Technology, Bhubaneswar. Welcome you, sir. Welcome, ma'am, to this forum. So now this day 2 will be hosted by Dr. Gautami Dokina. And now I would like to request Dr. Gautami Dokina to introduce our resource person. Thank you. Gautami ma'am, can you hear me? Gautami ma'am, can you hear me? Hello, Subha ma'am. Hi, Ajanta. Gautami ma'am, your voice is not coming. Gautami ma'am, your voice is not coming. I think some tech problems there. Gautami ma'am, can you hear me? Just a second, let me see. Dear participants, we are extremely sorry. I think technical glitches at her end. She's now connecting from mobile. So just bear with us for this inconvenience.
Hello, can you hear me? Can you hear me? Hello, yes, ma'am. Okay, Can you hear me? you can start now. Okay. Yeah. You can hear you. Good morning, one and all present here. We are in the second day of our FDP Insight. It is my privilege to introduce before all of you our resource person for today, Patami Mr. ma'am, I Vikas think we Kumar. have been connected from 2 devices. So voice is Now it's clear, ma'am. yes, it's very much clear. Okay, thank you. Good morning, one and all present here. We are in the second day of our FTP Insight. It is my privilege to introduce before all of you our resource person for today, Mr. Vikas Kumar, Deputy Director, Ministry of Textiles, Government of India, and alumni of NIFT Gandhinagar. Mr. Kumar was awarded for the best project in his graduation. Currently, he is working as a Deputy Director, Weaver Service Center, Bhubaneswar, Government of India. Then his career took off as a designer come export manager and Handicraft Development Corporation. He worked as assistant director at National Center for Textile Design Weaver Service Center at Delhi and Varanasi. He also played a key role in several projects, including the project School Uniform for 1.8 lakh girl students. He is one of the committee members for developing a course on textiles for students of standard 10th for NIOS and also awarded with Jar Craft in 2013. So without wasting any time, Vikas presentation. Thank you, ma'am, for this lovely introduction. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. Good morning to all the participant dignitaries and the management team of Rama Devi University for giving me this opportunity to talk and put my views on the textile heritage of the country. Myself Vikas Kumar, and I'm right now posted in Bhubaneswar on the position of Deputy Director, Ministry of Textile, Government of India. So today I will be discussing on the conservation of traditional textiles, its evolution, socio-economic significance of khadi, handloom and handicraft, and how to conserve the traditional textile, which is a major concern, which is a topic of major concern. So, as we all know that any country is identified by its art, craft, and culture. And if you see in the Indian context, then you will find India is a country which has so much variety of textile, and each state has its unique textile history. For example, if we start from Srinagar, you will find Pashmina shawl and Kani shawl, which is famous over there. Whereas in Punjab, the Fulkari is very important craft. In Rajasthan, the Kota Doria, Bagru and Sanganer prints are very much important. Then in Gujarat, the weavers practice patola. So in short, from north to south and east to west, you will find a variety of handloom and handicraft activities which is going on and has kept the textile heritage intact in our country. And let us feel very proud to say that India is the only country in the whole world which has this much variety of textile. अगर हम इक्कत की बात करें तो इक्कत उड़ीसा में भी होता है, आंध्रा में भी होता है, पोचमपल्ली में, और इक्कत आपका पटोला
पाटन पटोला में भी होता है, जो कि गुजरात में है। तो एक इकत जो हर स्टेट में जाके अपना रूप, रंग और सब कुछ बदलता है, वो सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है, और ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम जामदानी की बात करें तो जामदानी आपका बनारस में भी होता है, जिसको अवध जामदानी बोलते हैं। जो कोलकाता में होता है उसको तंगाइल जामदानी बोलते हैं, और जो वेंकटगिरी में होता है उसको हम लोग उपाटा जामदानी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जामदानी हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, सुआलकुची रीजन में। तो आप देख सकते हैं कि एक ही नाम से और एक ही टेक्निक, लेकिन कितना अलग हो जाता है दूसरे स्टेट में जाने के बाद। उसका प्रोडक्ट, उसके यार्न्स, उसके मोटिव्स, उसके डिजाइन, हर कुछ बहुत ही चेंज हो जाता है। और अगर आप हर एक स्टेट को देखें तो हर एक स्टेट में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सब बहुत ही अलग अलग है। उसके टेक्निक अलग है, मोटिव अलग है, डिजाइन अलग है, उसकी यूटिलिटी अलग है। सो इट्स वेरी रिच in the textile heritage. Now, a very important question, and it is a most debatable topic, like how to conserve the traditional textile. अगर आप सेंसस डेटा देखें तो आपको यह आश्चर्य होगा कि हर साल इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें मतलब संख्या घट रहा है। लोग जो इस प्रोफेशन को, बहुत लोग छोड़ रहे हैं, वो दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम भी उन गिने चुने देश में आ जाएंगे जहां पे टेक्सटाइल बहुत ही नाम मात्र का है। सो इट इज ए मेजर कंसर्न कि हाउ टू कंजर्व द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, हाउ टू कीप इट्स इम्पोर्टेंस इंटैक्ट, एंड जिस कारण हमारा देश जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए, वो कैसे बरकरार रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम पीपीटी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने इस प्रेजेंटेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज द हिस्टोरिकल पार्ट, which will be covered by my colleague Sobharani Lakra, who is associated with National Institute of Fashion Technology, and she has worked on so many government projects. So we together worked on the government project of Jharkhand, where we revived the different languishing painting like Jadu Petia, Shorai art, and the Kovar art. So we have done the conservation of the textile craft in Jharkhand state. And being at this post, I have got this opportunity to work on the textile of Delhi, Varanasi, Himachal, and right now in Odisha. So the first part will be covered by my colleague, who will focus more on the historical part. And the second part will be covered by me, which will focus on the various steps which is being taken by the government to conserve this craft, to bring this craft forward, and also help the weavers by this economical support and the other different type of support to carry forward this business forward. So here I would like to welcome my colleague, Mrs. Lakra, to focus light on the Indian textile heritage in detail. Thank you so much, Vikas sir, for giving me this opportunity to speak with you. So my heartfelt thanks to all the members of Rama Devi institutions, also those who are coordinating this event and managing and organizing this 7 days faculty development program. So I will be briefing, see, history is a very vast topic. We need lots and lots of time to listen to all of it, but I have just given a very brief, introduction, or we can say brief detailings about the different historical events that are associated with various kinds of textiles that is present across the country. So here goes my presentation. I'm sharing my screen. I hope my screen is visible to everyone. Yeah. Yes. So
This presentation mainly aims at presenting an overview of what are the different types of Indian textiles that has come through the different ages. We can start from the ancient Indus Valley civilization, how we got some evidences about the presence of textiles during that area. And then we will be relating this with the ancient and indigenous clothing textiles from different geographical context. We will be looking into their socio-cultural context as well. We will be looking into the regional and local languages and local motif derivations from different Indian textiles, or we can also look into the costume parts, which were based on communities and classes, how different classes used to have different sets of segregation in terms of textiles. And then finally, we will be looking into the evolution of textiles in India, pre-independence, post-independence, what were the different types of socio-cultural context associated with these textile crafts. So I will be looking into the different historical events, like how Indus Valley civilization gave us some of the evidences when we looked into the archaeological findings. We found the presence of textiles through their figurines. Here, all of you can see image of the priest which wears a shawl. The shawl, we are not sure what kind of a textile it was, but yes, these figurines which were there, it speaks of the different types of motif direction. Yes, it was a drapery, it was a draped garment. So we can see that the textiles originated from the Indus Valley civilization itself. Other than this, we can see what are the different drapery styles. They had draped, they did not have any stitched garment during that time. Also, some of the findings, like we had spindles and we had needles, we had numerous types of figurines which spoke about the presence of weaving, maybe because weaving is associated with spindling. It has the reeling of yarns and then finally spindling it and then weaving. So these evidences gives us the presence of weaving during that time. Also, there's one more evidence which speaks that cotton seeds were there. So cotton seeds were found from the Mehergarh excavation area, which is presently in Pakistan, and some of the jewelries were found which showed the presence of silk threads as a adjoining thread to combine different types of beads together. So this is how, when we look into the Indus Valley civilization, we see that even textiles existed during that area itself, during that time itself. Then we had the Vedic period, post-Vedic period, during which we find the presence of Paridhan in our Rig Veda. It speaks about how the different dyed textiles were there. So we have Mauryan periods. Again, Mauryan periods speaks about the presence of different types of textiles, the Uttariya, Antariya, and the your Angarakha was there. And so similarly, we will be looking into some of the archaeological evidences and architectural evidences also, which speaks of the presence of textiles. So we will be looking into the Gandhara School of Art. There we will see how these this image speaks about the presence of their tailored kind of a garment. So it speaks of the Kanishka, Gandhara School of Art. यहाँ पर उनको mix of Greek culture दिखा, जहाँ पर we had the presence of a structured garments and it was having a very good drape in it. So maybe this was cotton textiles which was originating along with some bit of your silk textile also. And these are found in the different types of caves, from our life events of Buddha, which we are finding in the Mathura Museum. We can see the presence of textiles over those areas also. So we
go back to the Gupta period, which says how Gupta Textiles was, Ajanta and Ellora cave. This is something which speaks about the different types of draperies they had, the architectural sculptures which were made. So this was specially highly intricate one. When we look into the Ajanta and Ellora caves, we can see the sculptures which were, they had very intricate textiles. So we can feel that these were the Bengal textiles, maybe, as Vikas sir was speaking about the baluchas and the jamdanis. So during this time, baluchas are the one which had heavy jacquards. So heavy jacquard fabrics had a very good fall in it, and we can see that kind of draperies into these sculptures. We can also find some of the coins which were existing during the Gupta era. So there we can see the presence of very light muslin fabrics. So the textiles during this time, during the Gupta period, were basically exported, and they were also, when we look into the history of it, we find that they were exported. They were also used as a barter system. So fabrics were developed by the weavers, and they were sold in exchange of commodities, various other commodities. So this can be seen through the various kinds of sculptures which were available in the Ajanta and Ellora caves. Then we look into the presence of Mughals. So Mughals was considered as, Mughal period. We, all of us, are aware that Mughals were highly patroned of the handcrafted and handloom textiles. So they were the ones, who loved the textile crafts. They gave importance to these crafts, and they tried understanding each and every skill which was prevailing in different regions. So they patroned them, they gave them a scope of development. And Mughals were the ones who have done maximum um, development in terms of arts and crafts everywhere. So we can see the magnificent architectures which are there in the form of Taj Mahal, or we can say Red Fort, Ya Buland Darwaja. There we can see lots and lots of jala work. So this was the time, during the Mughal time, we had maximum developments which took place in terms of the techniques, and also in terms of fusion of different types of motifs, because they had migrated from Persian region. So they had come, they brought along with them the different Persian influences into the motif cultures of Indian textiles. And at the same time, the Nawabs of Murshidabad, they also patroned the Baluchas, and during this region, this time only, the Balucharies or the Baluchas brocades were developed. And the Banaras brocades came up with lots and lots of new techniques. So new development of jacquards were there, heavy jacquards came into existence. And Noor Jahan, who was the wife of Jahangir, she was a very extravagant lady. So she patroned all the different types of handcrafted textiles. Like you have handcrafting of chikankari, handcrafting of jardozi, handcrafting of kasuti, kasida, kani shawls. So all these different types of textiles were innovated and were patroned during the Mughal period. So lots and lots of brocades were developed, different types of brocades with different varieties, gold and jari brocades together. So all these were developed, and these are found in these beautiful miniature paintings which are found from the Rajasthan School of Art, the different schools of art. We can see the miniature paintings, Mughal schools of art. So here we can see these are some of the paintings which speaks about their grandeurs in terms of intricacy, the motif development, the use of gold and silver. And this is presently visible through the miniature paintings that they have. And these are some of the evidences, or we can say the museum pieces which we find. And there we can see the presence of heavy brocades, the heavy embroideries, even different types of metal threads wrapped into the fibers, like the dhabla work or the jardozi work, mukesh work. These are the different types of
textile crafts which had been developed during the reign of Mughal emperors. So even apart from plain weaving, different types of twill weaving started, variations in the weaving generated, and these are some of the elements. So here you can see the fusion of original gold and silver threads in the form of Jardozi works and Banaras brocades. So the motifs we can see here mostly is the Kalka motif, the peacock motif, and the various foliages. These are the motifs which has been inspired by the Persian influences. So these are some of the kinkhabs. Kinkhabs were the very heavy brocades which were made out of gold and silver, original gold and silver thread. It was available earlier days, but now with the change of emergence of various kinds of even secondary elements for your gold and silver brocades, they have been replaced. But originally, these kind of brocades were developed. And along with it, some of the examples of the Jali work in terms of architectures which were there, we can find these kind of Jali work in the windows of Taj Mahal or Jama Masjid, anywhere all the Mughal architectures developed, and the same kind of effect was also derived into the textiles, the handcrafted textiles, which we can see here in the chicken curry work. This chicken curry work is also called the shadow embroidery or the jala work, where we can see the similar effects that of a jala, which is available in the architectural forms, have been tried bringing down to the textiles. So the next after them, we look into the Rajputs. Rajputs were basically the Kshatriyas from the warrior people. And here also we find basically 4 different types of product which they had. For women, it was ghagra choli, and for men, it was angrakha and turbans. So during the Rajputs period, we can see the emergence of very fine silk fabrics, organza fabrics in the terms of intricate brocades. Yes, and we had Chanderi fabrics, emergence of Chanderi fabrics. We can see the sheer fabrics emergence through different types of miniature paintings still available. So we have various techniques which grew during the Rajput period. They started with the block prints. Block prints were basically the printing of textiles, and under the block prints, again, there were different types of block prints which originated. They were Bagru style, which is made using a we can say resist printing technique. Then there were Sanganeri printings, which had different motif culture than that of a Badmeri one. Then we had Dabu printing. Then they also grew with the Badmeri painting. And then the Kota Doria textiles existed during the Rajput period. Kota Doria was a cotton textile which had the misdent effect, and they give a kind of a jala texture onto the fabrics. Along with this, the emergence of patolas we can see in the Gujarat region. Patola was the tie and dye, yarn tie and dye technique, which is considered to be one of the most luxurious textile as of now. But this is something which originated during the Rajputs period. Along with it, we also saw the emergence of various types of paintings, hand painted textiles across the Indian subcontinent. And here in this slide, all of you can see how the fusion of Rajputs and the Mughals has been very briefly presented in front of you. The presence of different types of textiles, this was almost similar to that of Mughals, and the Rajputs were having similar kind of a textile traditions. The motifs were almost similar. However, there were certain differences in terms of motif developments. So we can see the presence of sheer textiles, the presence of very extravagant handcrafting techniques like Jardozi, the Ari work, the
your Badla work and the Mukesh work, these were all there in the Rajputs. Along with it, we had very royal brocades in the Mughal emperors. So that is how we looked into Rajputs and Mughals. Then we go to the Nizams. The Nizams were the one who came up with lots and lots of materials which were highly, costly in terms of hand spinning. So they were the hand spinning, hand spun brocades. They had very silk and very fine velvets. They had fine mushrooms. They had very fine cottons like himroos, and we also had different types of brocades development during this time, during the time of the Nizam. So weaving was taken to the heights, hand woven textiles, very lavish developments of brocades using the extra weft techniques were also there. So there were different types of warps and wefts using the unconventional materials were experimented during this time. And colors were very royal this time. So color developments took place during the Nizam's time, when darker tones as well as lighter tones, very royal tones were introduced. And basically during the Nizam's time, there was a lots and lots of experimentation with the organic colors and the you can say the natural colors. And during the Nizam's times also, there were embroidery techniques, that is hand crafted techniques were introduced, like the Kalabatu work. The Jardozi was again taken to a very raised level. Then there were cut work, there were Badla work, and basically more of mirror kind of a work was involved during the Nizam's period. And when we look into the motifs, the floral motifs can be found in the Nizam period. And along with the floral motifs, there were also a lots of calligraphy, which was seen into the different types of textiles as well as the architectures which were developed during the Nizam period. Then these kind of all these evidences are there in museums now. So we can look into the Chowmahalla Palace in Hyderabad. It has a lots and lots of repositories of these kind of various textiles which are there. And here is a image which you can see at the extreme right is the traditional Chaugasiya women who is wearing a brocade fabric, which and she is heavily adorned with the jewelries during the Nizam's period. Then we have the Sikhs. During the Sikhs region, we also looked into lots and lots of handcrafted techniques, like we had fulkari, bag, we had chop. These were the different embroidery techniques. These were the different embroidery techniques which took place, and we see the presence of women, during the Nizams and the Rajputs. We saw that these works were basically done by the men folks. But during the Sikh time, during the Sikh reigns, we saw the emergence of women as the workers or the artists who were encouraged. And therefore during this time, most of the women artists came up with the development of fulkaris. They sat in group and they started developing these kind of handcrafted textiles, and these were the gifts which were developed by these women for their daughters. So as and when these, there was a birth of a daughter back at their home, the women in the home, they used to start making the fulkaris, different types of chops, and they used to send these gifts as the gift to their daughters when they grew up. Then we look into how the influx was there.
influx of different other, cultures into the Indian textiles. So during this, we can see the emergence of different trade routes like the silk route, the spice route, the emergence of spice trading from India. Vasco da Gama came to India, and how it flourished the spice trade. And as a barter system, the Portugals came into India and they started collecting the calicos, or you can say the chintz fabric from India, and they started taking it to their countries, to the different countries. So Indian cotton was the one which was highly accepted by all the other countries, and they started trading Indian cotton fabrics in the form of calicos, in the form of chintz, and they started spreading across the world. So during this time, the Indian fabric started traveling across the globe, and we can say the production, these handloom productions, these handcrafted production increased, and Indian economy also thrived to the maximum. During this time, we can see the emergence of different trade routes. And just after that, in the 18th century, we saw the emergence of industrial revolution, when there was the development of mills, textile mills, so mechanized mills. And once this industrial revolution started, the emergence of textile mills led to the production of lots and lots of uh, faster, fabrics which could be done faster. And because it was all automated, so there was heaps and heaps of textiles. Now during this period, what happened, the Indian handlooms or the Indian fabrics, heritage textiles, started losing its importance in the global economy, in the global scenario, because the production cost of handloom increased, and the production cost of power loom decreased due to its mechanized features. And also the trade policies were, changed by the Britishers. So during this time, what happened? There was a downfall of Indian heritage textiles. And at this time, we look into the Swadeshi movement, when Mahatma Gandhi, he promoted the emergence of khadi. Khadi is something which is done by hand spun yarns. So the yarn is spun manually, and then this yarn is again generated into the handloom textiles. So khadi is basically the handloom technique and the hand prepared fabrics which is done for the preparation of fabrics. So during this time, during the Swadeshi movement, there was the promotion of khadi by our national leader, and then which was carried on in a large scale after the independence came in. So after we got the independence, we saw khadi cotton, we saw khadi silk, both of it emerged. In the khadi silk, we saw the development of silk, which was in terms of khadi. Different types of silks were katia yarns, the different types of ghicha yarns, the different types of muga yarns. So these were the different parts of the silk yarns which were developed as a khadi silk. Subha ma'am, I think she has some problem. She's trying to connect.
please bear with us. I'm really sorry for the inconvenience caused. Actually, my connection had got disconnected. So here I was speaking about the emergence of handicraft sector after the independence or during the independence. So here I have a very small video which speaks about how handicrafts traveled to India. So I'm sharing that. It's a request to all the participants, please switch off your videos. Participants, please switch off your videos. I hope my screen is visible to everyone and the sound is audible. Yes, yes, yes. આપણે નવો કામ કરવું હોય ને આપણે ધીરે નવો ઉઠાડવું હોય તો પછી એવે વિચાર કરીએ રાતના સુતા સુતા આસ્તે આસ્તે રાતના વિચાર આવે દિવસના કામ થાય દીરોજ વિચાર નથી તો વિચાર દીરોજ કામ બોલ ચાલ મેં જો રાતની નીંદર ન કરો વિચાર કરો કી બનાવું કેવે નહીં કમ કમ पीस बनायो हमारे आधी गम घर हमारा है नक्शो हमारे में बनायो पहला हमें हमारे घटी मंगड़े जाता हमारे उताक आपने तो खबर न रहे ना આપણે જોઈ જાય ને મકાન છે આ વાતા એવો એવો થાય ને આપણે રમાં એ બેચારા હેરાન થયા હતા એમાંથી ઉપડ્યા હતા એના મકાન છે એનું ગામ છે આપણે ભારત ને પાકિસ્તાન બી લડ્યા આવું છે તો મને કઈ ખબર નથી ક્યાં લડ્યા એ લડ્યા ભારત અમે રહેતા એ જીતું પણ અમે કીધું ભારત में જાવું રણ में ઢળ્યા તો રાતના નીકળ્યા દી ઉગો ને અમે રણ ઉતર્યા ત્યારે હું નાનો બાળક હતો મતલબ 8 વર્ષની મારી ઉંમર હતી સાથે અમે એક ગાડો કર્યો હતો અને અમારી ઊંટડી એટલે
ક્યાંક જઈ રહ્યા છે ખ્યાલ છે, પણ આવો ખ્યાલ નહીં કે હવે ઘર છોડીને જઈ રહ્યા છીએ. ના વાદે કે આપણો ભારત છે તમે કેમ આવો કે તો અમને કીધું કે ચલો હવે તમને મતલબ આખર શું કરો, તો અમે એમ કીધું કે અમને ગમે હિન્દુસ્તાનના ખૂણામાં નાખો, પણ પાકિસ્તાનમાં નથી જવું, અમારે હિન્દુસ્તાનમાં રહેવાનું. તો એ લોકો કીધું કે તમારે કચ્છ જવું પડશે. તો ઠીક છે, અમે કચ્છ આવીએ અને આ રીતે અમે કચ્છમાં આવ્યા. અને કચ્છમાં અમે મતલબ અહીંયા જુરા કરીને ગામ છે, અહીંયાથી 15 કિલોમીટર ત્યાં કેમ્પ બનાવી દીધો. જ્યારે અમે આવ્યા ત્યારે કાંઈ મતલબ ત્યાં આયા તો એ ડુંગર મેં લઈને ખટારા ગયા તો માણસ બધા કે એક કીથે પીડી જાય તે લોકોને કોઈ વ્યક્તિ નથી, સાવ ઉજળ મતલબ જંગલ જેવો વિસ્તાર. ધીરે ધીરે અમે લોકો જે કંઈ બગડામાં ઝાડમાંથી જે મતલબ ઝાડ કાચમાંથી જે ભૂંગા વગેરે બનાવીએ, પછી આમ મતલબ ધીરે ધીરે ટાઈમ પસાર થતો ગયો. એમ થોડા ટાઈમ પછી પિતાજી ત્યાં પાકિસ્તાનમાં પણ શિક્ષક હતા, એમણે સ્કૂલ શરૂ કરેલી અને અમે લોકો પછી અમારી મતલબ પ્રાથમિક શિક્ષણ અહીંયાથી જ શરૂ થયું. અમે 1980 સુધી જુરા કેમ્પમાં એઝ એ રેફ્યુજી હતા. એના પછી ગવર્મેન્ટ બદલાણી અને 1980માં મતલબ અમને સિટીઝનશીપ મળી અને અમે લોકો સુમરાસર ગામમાં આવ્યા. માસ્ટર હું આવી ને તો મને 18મું વર્ષ બેઠો હતો ને 17 ઉતર્યો ને 18મું બેઠો એમાં મારા લગ્ન થયા. આ મારું ઘર છે હું રત્નારનું પિયરમાં મારા બાપનું. તો આ મારા પિયરમાં ખેતીવાડી એમાં કરતા. પછી ધરતીકંપ થયો ને તો પછી રડવા માંડ્યા બધા કે આ મારી મમ્મી ઊભા છે. તો અમે નાના હતા તો અમને બધી ભેગા કરીને આમ કે રડો નહીં કે તો એ રીતે આપણે મતલબ 2001 ભૂકંપ આવે અને એ એટલો મતલબ માનસિક રીતે માણસ એમાં આવી ગયા કે કોઈ જોયો હોય નહીં ભૂલી શકે. After the earthquake of 2001, two different people independently asked us to do essentially what's narrative work or expressive work. જો આ જે વાર્તાનું કામ આમ તો શું છે કે પેચ વર્ક તો એ મતલબ અમારા પરંપરાગત કામ છે, પણ એમાં એક વાર્તાને લઈને કામ કરવું એ ટ્રેડિશનલ નથી. After this project, which I thought was over, Rani Ben and Meggie Ben came to us and said, can we do another one? મારે મન મેં એવી ધારી મેં કીધું મારે કલા રક્ષા બનાવી છે. મારો દીકરો પ્રકાશ ભુજને ગયો. I came to do research on silk embroidery. So I went into a tailor shop, and there was a young man with a beautiful silk embroidered bag. So I went up to him and I said, where did you get that bag? And he said,
ઘરે હું ઘરે આવું છું. મોસ્ટ વેલકમ, ભલે આવો. તે બધી અમારી મતલબ એક કારીગરી દ્વારા પરિચય થયો. One day, Diaban, the younger sister, looked up from her work and said in exasperation, "Why are you studying us? Why don't you help us?" સાચી રીતે જોઈએ તો કલારક્ષાની અહીંયાથી જ શરૂઆત થયેલી. અમે લોકો જ્યારે સંસ્થાની શરૂઆત કરેલી ત્યારે 20 કારીગર આ ગામમાંથી જ શરૂઆત કરેલી આજથી 15 વર્ષ પહેલા. અત્યારે અમારી સાથે અમે લોકો 1000 કારીગરો સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ. 25 ગામડાઓમાં અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છીએ અને કારીગરો માટે અમે લોકોએ એક ડિઝાઇન સ્કૂલ પણ બનાવેલી છે. And you can see in how they speak about their work. જો ઓલી બેન પીસ કેવો આવ્યો? આ જુડી છે ને અમારો પીસ જુઓ કેવો સારો છે. આ મારો દીકરો સામજી અહીંયા છે ને ઘેર છે આમ સામજી મારો દીકરો છે આ સોલરની સંભાળ લે. આ આપણી કલા રક્ષા. પછી આ ઓફિસ પ્રકાશન બેહે. પછી આ દુકાન છે વેચાણ કરો એ છે અને આ પ્રકાશભાઈ દુકાન. આમાં આ એને ઈંચકા આપણે ચાલી છે પાછા 4 જણા બેઠા છે. પોતાની રીતે એક બોલવાની એમનામાં ક્ષમતા વધે છે, પોતાની વાત કહી શકે છે. આમાં તો મને મજા આવે. જો હાંજ થાય તો જાણે કે દીવું કે રાતનું કરા કે દીનું કરા કે મજા જ મજા પડી એ બંધ ના કરા જાણે સમજો એવો મજા આવે. So this is how the craft traveled to India, and many craft activists like Judy Frater, Laila Tayyabji, and Pupul Jayakar, they have revived the different crafts. They have given shelter to the different crafts from various places. And we, as rightly said by Mr. Vikas, that India is one of the country which has most handcrafted and handloom textiles here in our country. So when we look back to the emergence of, we can say, the handloom and handicraft again. So after the makeover of khadi, after independence, there was a makeover of khadi and various textiles, various indigenous textiles, like we have Koti weaving, we have Dongriya shawls from here in Orissa itself, and there are many more Kotpad. We have Kotpad textiles. So there are many more textiles across the country which rejuvenated, and here now different, we have the government of India is taking interest in developing all these craft sectors into the most advanced and luxurious forms of textile heritage now. So different designers, we have different designers like Rajesh Pratap Singh, even Namika Khanna, Ritu Berry, and Sabyasachi Mukherjee. All of them are related, all of them are working with the textile heritage of India, and they have made these traditional khadi silk and khadi cotton as the luxurious fabric in the present global market. So not only the Indian designers, but also we have various international designers. Donatella Versace, we have Gucci, we have Iris Van Herpen. Everybody is looking into the Indian crafted hand textiles and handcrafted textiles to come up with their latest collections. And for this, we have, this has not come on a
within a night, we can say, but there was a huge effort from the government of India to come to the position where we are now. We have understood the importance of climate change. We know how these handcrafted textiles are reducing the carbon footprints in the environment, and therefore, in order to look into the various schemes implemented by the government of India, now I hand over the presentation to Mr. Vikas for the presentation. Thank you. Over to you, Mr. Vikas. थैंक यू सुभा, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी एक टेक्सटाइल जर्नी दिखाई। ऑडिबल? हेलो? Yes, you are. Yes, you are. आपने आपने शोभा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पूरी टेक्सटाइल जर्नी दिखाई, जो कि राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द प्रेजेंट डे। इनके प्रेजेंटेशन में मुझे पहला स्लाइड बहुत अच्छा है, जिसमें कि एक स्कल्पचर है और उसके ऊपर कुछ गारमेंट्स जो ड्रेप है उसको एनग्रेविंग किया हुआ है, उसको कुछ नक्काशी कुछ किया हुआ है। अब आज का जो समस्या है, हम ये नहीं चाहते कि हमारा टेक्सटाइल रहे। सो आज का जो नीड ऑफ द आवर है, जरूरी है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ या हम लोग इंडिविजुअली भी मिल के और इस क्राफ्ट को कैसे इसको कंजर्व करते हैं, कैसे बचाते हैं, जो कि बहुत ही मेजर कंसर्न है। इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत ऐसे प्रोजेक्ट निकाले हैं। अच्छा, मैं ये प्रोजेक्ट स्कीम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता दूं कि ये किनके लिए हेल्पफुल है और कैसे हेल्पफुल है। देखिए, इसमें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है वो हो सकते हैं कि इस टेक्सटाइल को आगे एज ए प्रोफेशन लेके जाना चाहें, या उनके समाज में उनके इर्द गिर्द ऐसे कुछ काम है, टेक्सटाइल की एक्टिविटी हो रही हो, तो वो इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, या खुद भी इसको एज ए स्कीम एज ए प्रोजेक्ट लेके और आगे काम कर सकते हैं, सो दैट द टेक्सटाइल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट बिकम द हिस्ट्री, बट इट शुड रिमेन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, जो पटोला का रियली फील कर सके, देख सके, और अगर चाहे तो पहन सके, ना कि इसको म्यूजियम में एक टुकड़ा बस देख सके कि इसको पटोला बोलते हैं। तो इस दिशा में काम करते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले हैं जो इस क्राफ्ट को आगे रिवाइव कर सकता है। तो एक जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसका नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर मतलब वो एक ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करना जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं, और वहां पे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिसको सारा कम्युनिटी एज ए होल यूज कर सकता है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो एक ऐसा गांव जहाँ पे बुनकरी का काम चल रहा है, सारे लोग बुनकर है, वहां पे अगर हमने एक डाइंग हाउस सेट कर दिया तो सारे लोग वहां से डाई करवा सकते हैं। अगर हमने एक कोई कंप्यूटर का कैड सिस्टम सेट कर दिया तो सारे लोग वहां से डिजाइन ले सकते हैं। अगर हमने कोई वहां पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिया तो वहां पे अंडर अ रूफ सैंपलिंग हो सकता है, बैट्स आ सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और ये काम आगे बढ़ सकता है। तो इस दिशा में काम करते हुए गवर्नमेंट ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक ऐसा व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है जहां पे 200 से 300 लोगों को एक साथ उसका बेनिफिट मिल सके। तो अब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट कौन ले सकते हैं, हु कैन बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इवन एनी इंस्टीट्यूट। अगर रमा देवी यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसा कोई डिसिप्लिन है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि टेक्सटाइल को देखता है, इवन दे कैन टेक अप अ प्रोजेक्ट एंड अडॉप्ट वन विलेज एंड इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनी इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है वह था 2 करोड़ का। 2 करोड़ दिया था 3 साल के लिए, जहां पे आप उस एरिया को ऑल टुगेदर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें इंटरवेंशन के रूप में स्किल ट्रेनिंग होता है, स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग, जिसमें कि वीविंग, डाइंग, डिजाइन सारा कुछ आता है। उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि अगर कोई गरीब बुनकर है तो उनको वर्कशेड बनाकर दिया जाता है, कॉमन वर्कशेड डेवलप किया जाता है। जो बुनकर अगर रात में भी काम करना चाहे अगर तो उनके घर में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाती है ना। क्लस्टर को डेवलप करने के लिए आपको 2 मैन पावर दिए जाते हैं, एक डिजाइनर और एक टेक्निकल पर्सन, जो कि 3 साल तक उस प्रोजेक्ट के खर्चे पे उस क्लस्टर को ऑल टुगेदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये है एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक खाका जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जो बहुत सारे क्लस्टर में, बहुत सारे स्टेट में चल रहा है।
अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी 30 ऐसे क्लस्टर चल रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। इनसे लोगों को, बुनकरों को काफी फायदा मिला है, जिससे वो अपने काम को रिवाइव कर सके हैं। चाहे जो भी लैंग्वेजिंग क्राफ्ट है उसको रिवाइव करने में मदद मिली है थ्रू आवर R&D प्रोजेक्ट अंडर दिस क्लस्टर प्रोग्राम ओनली। उसके बाद आपको जब माल तो बन गया, आप सबसे बड़ी समस्या आती है इसको बेचना कहाँ है। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट का है हैंड मार्केटिंग असिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट साल में कम से कम 100-150 ऐसे एग्जीबिशंस लगाती है, डोमेस्टिक लेवल इवेंट, नेशनल लेवल इवेंट, इंटरनेशनल लेवल इवेंट, जहाँ पे जो बुनकर है, जो वीवर है, उनको फ्री में गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है कि आप जाइए वहां पे अपना माल बेचिए और बिजनेस कीजिए, सो दैट कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो, इसका उत्पादन हो और लोगों तक ये पहुंचे। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे अर्बन हाट को भी सेटअप किया है। जैसे कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया गवर्नमेंट का कि वो बना रहे टूरिज्म विलेज बना रही। वैसे स्टेट जहाँ पे टूरिज्म भी है और हैंडलूम की एक्टिविटी है, उस पूरे गांव को डेवलप कर रहे हैं एज ए टूरिज्म विलेज, और वहाँ पे हैंडलूम की एक्टिविटी होगी। वहाँ पे लोग जाके परचेज कर सकते हैं, हैंडलूम की एक्टिविटी देख सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही लिमिटेड हो गया। अगर शहर की बात करें तो वहाँ पे आपको शायद हैंडलूम देखने को ना मिले। आप उड़ीसा में यू आर लकी कि यहाँ पे हैंडलूम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप का जो टूरिज्म विलेज है, ये कानीहमा श्रीनगर में स्टैब्लिश किया गया, कुल्लू में स्टैब्लिश किया गया है, और आने वाले समय में भी 8-10 प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये स्टैब्लिश किया जाएगा। तो आपका तो माल बन गया, अब आती है बात ब्रांड बिल्डिंग की, क्योंकि माल आप लेके जाएंगे, सब कुछ हैंडलूम है, तो हैंडलूम में अलग क्या है, खास क्या है, आपका प्रोडक्ट को कैसे लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ISI मार्का होता है, जो कस्टमर देख के बोलता है ये अच्छा प्रोडक्ट है, हमें इसे लेना है। इसी तरीके से हैंडलूम को भी सर्टिफाई किया गया डिफरेंट सर्टिफिकेशन से। जैसे कि एक है इंडिया हैंडलूम ब्रांड। इंडिया हैंडलूम ब्रांड एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो ये बताता है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो, मार्केट से खरीद रहे हो, वो प्योर हैंडलूम पे बना हुआ है, उसमें नेचुरल फाइबर यूज हुआ है, एजो फ्री डाइज यूज हुआ है, मतलब ऐसे डाइज केमिकल जो स्किन को हार्म न कर सके, और इसमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आज का जो मार्केट है वहां पे प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोरी बिकती है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे हमारी जो देश में, हमारे भारत में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्योंकि आप जो धागा हम कॉटन ले रहे हैं, ये सब सेलुलोसिक फाइबर है। जो लूम पे काम हो रहा है वो हैंडलूम है, हैंड ड्रिवन मशीन है, पावर जनरेट नहीं हो रहा है। जो हम डाइज यूज कर रहे हैं वो एजो फ्री है या नेचुरल डाइज है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये एक ऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाता है। और आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा टूल है मार्केट प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि हर लोग बात करते हैं सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल फैशन। ये है क्या? सस्टेनेबल फैशन ओनली हैंडलूम ही हो सकता है। सो अगर इंडिया धीरे धीरे डेवलप करते हुए आज हम हैंडलूम को मतलब अपने से अलग नहीं होने दिए हैं, तो इसका बेनिफिट उठाने का भी बारी हम लोग के पास है। हम इस चीज को प्रिजर्व करके और वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल। जैसा सुभाष ने बताया कि आज के डेट में जितने भी डिजाइनर्स है वो भी हैंडलूम की तरफ आ रहे हैं। मोरओवर जितने भी इंडिया में मेजर प्लेयर्स है टेक्सटाइल में, जैसे टाटा का ने एक ब्रांड लॉन्च किया तनेड़ा करके, जो कि प्योरली फोकस करती है हैंडलूम के ऊपर। रिलायंस ने एक ब्रांड लॉन्च किया स्वदेशी, पूरा फोकस करता है हैंडलूम के ऊपर। आदित्य बिरला ने ब्रांड लॉन्च किया अध्ययन। तो सबको पता है कि आने वाले समय हैंडलूम का है, इसलिए इसमें पहले से रहो ताकि आप मार्केट में एक लीडर बन सको। हैंडलूम पावरलूम से अलग क्यों है? कैसे? इसका जो टेक्सचर है, लुक है, फील है, फॉल है, वो पावरलूम मैच ही नहीं कर सकता। एंड दिस इज व्हाट मेक हैंडलूम डिफरेंट। नाउ जो अब बुनकर ने माल बना लिया, बेचने के लिए हमने मार्केट दे दिया, उसको हमने एक सर्टिफिकेशन भी दे दिया। अब उन बुनकरों का क्या, जो अपना पूरा जिंदगी बुनकरी में लगा दी, तो उसको काम को अप्रिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट उनको अवार्ड्स एंड अप्रिशिएशन करती है, जिसके लिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स का एक बनाया गया है। पहला है सबसे उत्तम जो कैटेगरी, वो है संत कबीर अवार्ड। इसमें वैसे बुनकर जिनकी उम्र 50 साल की है और जिन्होंने 20 साल का सर्विस हैंडलूम में दिया है, और जिन्होंने एक अलग तरीके से ही योगदान किया इसे को आगे बढ़ाने के लिए, उनको संत कबीर अवार्ड से नवाजा जाता है।
जिसमें कि उनको कैश मनी दिया जाता है, मोबाइल फोन दिया जाता है, गोल्ड कॉइन दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो अवार्डी को हर जगह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि किसी भी एग्जीबिशन में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आने का, जाने का, वहां पे एग्जीबिशन पुट करने का ये फैसिलिटी दी जाती है। दूसरा कैटेगरी है नेशनल अवार्ड, जहाँ पे 3 कैटेगरी में लोगों को सम्मानित किया जाता है। एक वीवर कैटेगरी है, दूसरा है डिजाइनर और तीसरा मार्केटर। कहने का यह मतलब है कि बुनकर जो काम कर रहे हैं उनको काम को तो सराहना दिया ही जाता है, लेकिन वैसे डिजाइनर जो कि डिजाइन करते हैं हैंडलूम को, हैंडलूम के टेक्सटाइल को डिजाइन करते हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है। और वैसे मार्केटियर, ई कॉमर्स हो, कोई एंटिटी हो, प्राइवेट एंटिटी हो, जिन्होंने इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अवार्ड भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के द्वारा दिया जाता है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है और इसका बहुत फायदा भी है बाद में। महिलाओं को इस सेक्टर में आगे रखने के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि महिलाओं को भी इस काम में बढ़ावा मिले और उनको एक अलग सी पहचान मिले। उसके बाद जो चौथा कैटेगरी वो नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट, जो अवार्डीज को दिया जाता है उनके अच्छे काम के लिए। जो नेशनल अवार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और जिनका काम अच्छा होता है, उनको एनएमसी नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया जाता है। अभी आपको पता होगा कि आज का जो दौर है वो ई कॉमर्स का है। गवर्नमेंट ने अपने आप को आजमाने के लिए और लोगों को इसका बेनिफिट देने के लिए ई कॉमर्स मार्केट भी स्टार्ट किया है, जिसमें कि जेम पे लोगों को ऑनबोर्ड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट खुद भी एक अपना एक वो प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, ई सिल्क बोल के, जिसमें कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है और बहुत ही कम रेट पे उनको मार्केट किया जाएगा। इसके अलावा अभी जो मेजर प्लेयर है ई कॉमर्स में, लाइक अमेजोन, गूगल, मिंत्रा, इस सब पे भी ये भी हमारे साथ कोलैबोरेट होके वीवर के प्रोडक्ट को होस्ट करते हैं। अमेजोन पे तो अमेजोन कारीगर बोल के एक अलग सा ही उनका एक पोर्टल है, एक पेज है, जहाँ पे सिर्फ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीजें आप वहाँ पे ले सकते हैं, पा सकते हैं। और वीवर के काम को आगे बढ़ाने के लिए वीवर्स मुद्रा लोन का प्रोविजन है, जहाँ पे उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है, जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। अब वीवर्स को काम जो कर रहे हैं, जिस रोजगार से जुड़े हुए, उनके हेल्थ की सुविधा, हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट का 3-4 स्कीम है, लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ये सारे स्कीम्स है जो उन बुनकरों के लिए जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने इसी साल एक और स्कीम लेके आई है, जिसमें कि पेंशन का प्रोविजन है। पेंशन उन वीवर को दिया जाएगा जो कि अवार्डीज हैं, पद्मश्री, संत कबीर, नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड, और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने 60 साल की उम्र क्रॉस कर लिया हो, उन्हें 8,000 रुपए मासिक दिया जाएगा पेंशन के रूप में। ये एक बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद स्कीम है, जो कि बुनकर जो इतने साल अपना योगदान दिए इस सेक्टर के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और मोर ओवर जो बुनकर के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए डिजाइन कॉलेज में या टेक्सटाइल से रिलेटेड कॉलेज में पढ़ने के लिए 2 लाख तक का उनका वो है एक स्कॉलरशिप दिया जाता है 2 बच्चों के लिए पर एनम। 2 लाख रुपीस का पर एनम का स्कॉलरशिप दिया जाता है 2 बच्चों के लिए 3 साल या 4 साल की पढ़ाई के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है पूरे डिपार्टमेंट को अपडेट करने के लिए या पूरे बुनकर समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, राइट फ्रॉम देयर बिजनेस टू प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, टू बिल्डिंग देयर कॉमन फैसिलिटी सेंटर, to the health of the weaver, education of the kith and kin of the weaver, and even promoting them by giving the awards and appreciation. So जब तक ये सारा मतलब कि ये जो स्कीम है ये लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर। और रामा देवी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह का कोई डिसिप्लिन है, अगर बच्चे वैसे काम कर रहे हैं, so they can anytime come to our office in Bhubaneswar and get the assistance of all these things which I have talked about.
Moreover, in our office, we have one small R&D center where they will be given the facility to develop their samples as per their design and all, which will be supported at a minimal cost, जो government का cost होता है. They can even enroll themselves for the short-term training and observation training at our center, which will help them to inculcate themselves in the various disciplines like design, weaving, dyeing, printing, visual dyes, marketing, and other aspect of this handloom profession. So I think these are all about the schemes which is run by the ministry for the upliftment of the sector. And I think कि जब तक ये चीज हिस्टोरिकल पार्ट जो टेक्सटाइल का हमने सुभाष जी ने बताया और जो अभी का जो नीड ऑफ द आवर है, जब तक इस सारे चीज को हम क्लब नहीं करेंगे तब तक हैंडलूम को वो मुकाम नहीं मिल पाएगा, चाहे वो एक मंजिल नहीं मिल पाएगी जिसकी हम बात आज कर रहे हैं. तो इसलिए सबको आगे बढ़ के गवर्नमेंट अकेले नहीं बल्कि एज ए इंडिविजुअल भी हम लोग को एक प्रण लेना चाहिए कि कम से कम हमारे वार्डरोब में एक तो ऐसे टेक्सटाइल हो जो कि कहीं हैंडलूम हम गर्व से कह सके कि ये इंडियन हैंडलूम है, इंडियन टेक्सटाइल है. और बिलीव मी आने वाला समय इसी का है. सो इट इज बेटर टू गेट ऑन बोर्ड at as early as possible. So this was all about my schemes part. Hello. Hello. Hello, I'm audible? Yes, sir. Yes, this was all about my scheme part which is run by the ministry. So with this, I will end my presentation. Thank you, sir. Thank you, Sobharani Lakra ma'am, for giving us this very beautiful and colorful perspective about textiles in ancient days. A very exquisite presentation indeed. It was nice to see the close linkage between the textiles and architecture. We have got an idea of the evolution of textiles during the reign different rulers. Thank you, Mr. Vikas Kumar, sir, for enlightening us on the cluster development program where rural women get the beneficiated or empowered, the importance of handloom and the shift from the manufacture to Swadeshi is on the rise. And also the schemes mentioned are quite useful for entrepreneurial activity. Definitely, let's hope that the ancient textiles are revived and remain with us, our future generations. Sir, we have some questions from the participants. Yeah, sure. How to differentiate jamdani of different states? देखिए जामदानी की हम जो बात करते हैं, जैसे आप जो बनारस में जो बनता है वो अवध जामदानी है, जो कोलकाता में तंगाइल जामदानी है, जो आपका वेंकटगिरी में होता है उपाड़ा जामदानी है, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है वो सुआलकुची रीजन में सुआलकुची साड़ी बोलते हैं, वो जामदानी भी है. तो जो डिफरेंस है बेसिकली सबका वो इन टर्म्स ऑफ यार्न है. जो आपका अवध में जो होता है, जो आपका बनारस में वो कॉटन यार्न पे होता है, लेकिन अब वो लोग सिल्क पे भी करने लगे हैं. लेकिन वो जो है ना बहुत ही शेयर फैब्रिक है और वो कॉटन ऑन कॉटन होता है, मतलब कि बेस फैब्रिक भी कॉटन है, डिजाइन भी कॉटन से है. लेकिन आप जब और जो मोटिफ जो होती है, जैसे जो बनारस में जो बनता है वो ज्यादा फ्लोरल है, लेकिन आप जब टांगाइल का देखेंगे तो उसका नेचर अलग है. आप वही आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां पाएंगे कि उनका जो वो जो धागा है ना काफी कोर्सर धागा यूज करते हैं, और उनका जो पैटर्निंग है ना वो काफी मोटा है, मतलब कि जो धागा है उसका काउंट ज्यादा है. कॉटन जो वो डिजाइन का पैटर्निंग करते हैं वो कोर्सर कॉटन से करते हैं और बेस उसका अलग धागा होता है. जो पाड़ा का जामदानी है उसमें आपको मिलेगा बड़े बड़े आपका तो वो मतलब कि पीकॉक का मोटिफ, मतलब कि एक बड़े बड़े पैटर्न, मतलब पल्लू में पूरा वो जामदानी करके बड़े बड़े मोटिफ से वो करते हैं, और थोड़ा सा उनका ज्योमेट्रिकल एंड उसका मोटिव का रहता है. तो इस तरीके से अगर आप सारा जामदानी को अगर देखें एक साथ, जो कलर ये बहुत ज्यादा अंतर होता है. इसके ऊपर अगर ये अजंता मैम को मैं अलग से है ना एक सारे जो डिफरेंट टेक्सटाइल्स है जामदानी का, उसके मैं कुछ विजुअल्स भेज दूंगा सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू मींस आइडेंटिफाई एंड differentiate. Yes, sir. Yeah. Sir, another question, sir. What are the emerging trends in fashion industry today?
मैम देखिए, आज जो मैंने पहले बताया कि अभी जो एक हो रहा है, हम कहीं भी सुनते ना, बोलते हैं सस्टेनेबल फैशन, चाहे इको फैशन, इको फ्रेंडली, हम लोग आज नेचर के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गए। वी आर गोइंग क्लोज टू द नेचर, दैट इज नीड ऑफ द आवर। ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था, और मुझे तो लगता है थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। तो आज क्या है ना कि इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है, कार्बन इमिशन जो है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर है उस चीज में। अगर आप हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करो, जो हैंडलूम की नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो, तो जो हम लोग वाटर पोल्यूट करते हैं, आपको पता, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 मीटर कपड़ा बनने में कम से कम 20 से 25 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो इतना ज्यादा हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। जो केमिकल्स, डेडली केमिकल्स निकलते हैं, उससे स्किन को हार्म है, बहुत सारे कैंसरस डिजीज होता है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैनकाइंड के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज के डेट में अगर हम हैंडलूम की तरफ आते हैं, हम अपने क्राफ्ट कल्चर की तरफ आते हैं, तो ये सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। मोर ओवर, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइड करने वाला ये सेक्टर था, दिस टेक्सटाइल सेक्टर। आपके एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ऑक्युपाइंग सेक्टर था। तो आप ये सोचिए कि आपके इस चीज को बढ़ावा देने से कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा जो एक तो ट्रेडिशन जो है वो इंटैक्ट रहे, हम जो वर्ल्ड लीडर में टेक्सटाइल के जो है वो हम आगे भी बने रहेंगे। इससे जो 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख जो जुड़े हुए हैं, वो अपना बिजनेस रोजगार में रहेंगे, और हम अपने अपने लिए और अपनों के लिए वैसे टेक्सटाइल बना पाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हर तरीके से, सेहत के तरीके से, जो काम कर रहे हैं उनके भी लिए और जो उसको यूज कर रहे हैं उसके लिए भी। और इस चीज को एनालाइज करते हुए आज जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं वो सारे अब हैंडलूम पे आ रहे हैं। आप अगर विद्या वाला ना किसी भी एक्ट्रेस को देखो, वो पावरलूम की साड़ी पहनती हुई नहीं दिखेगी, डिजिटल प्रिंट पहनती हुई नहीं दिखेगी, वो दिखेगी आपको किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पहने हुए, पटोला पहने हुए, या कांजीवरम पहने हुए, या बनारसी पहने हुए, कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो बात है, जो डिजाइन है, जो मेहनत है, जो कला है, ये पावरलूम में कभी भी आ ही नहीं सकता है, वो उसको कॉपी कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए अभी का जो फैशन ट्रेंड जो आने वाला है वो आपका हैंडलूम का ही है। तो इसमें जो भी लोग इस बिजनेस में हैं, या जो भी लोग इस चीज को परस्यू करना चाहते हैं, सो दे adopt this profession for their future endeavors. Hello. Hello, sir. Yes, sir, Please. we can hear. We have another question, sir. Yes. What are the various e-commerce initiatives to support weavers in India? देखिए, अभी हमने परसों ही एक वर्कशॉप किया था अमेज़न के साथ। अमेज़न कारीगर, अमेज़न ने एक स्पेशल पेज, अलग सा पेज एक लॉन्च किया अमेज़न कारीगर के नाम से, जिसमें कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को वो लोग प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो गोकूप करके है, मतलब कि अमेज़न तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए, कुछ छोटे प्लेयर लाइक गोकूप है, तिजोरी है, प्लस आपका ई सिल्क करके गवर्नमेंट भी एक पोर्टल लेके आने वाली है। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमारा एक गवर्नमेंट के द्वारा रन पोर्टल एक आ जाएगा, जो कि मतलब कि बहुत ही कम कमीशन पे लोग उस पर अपने मार्केट प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। मोर ओवर, जब गवर्नमेंट इसको रन करेगी, देन they will spend on the promotion, publicity, both national and at the international level. So it is going to be a very good thing. मोरओवर, जो हमारे जेम, आपको पता होगा, जो भी गवर्नमेंट बॉडी से जुड़े हुए हैं, हम लोग का जो भी मास प्रिक्योरमेंट होता है जेम के थ्रू होता है। तो गवर्नमेंट ने इस दिशा में भी अपने ध्यान को वो रखते हुए और इस अपॉर्चुनिटी को भी इनकैश करने के लिए वैसे बुनकर को इस पे रजिस्टर करवाया है, जो कि बल्क में माल सप्लाई कर सके। कहने का मतलब है कि कल के डेट में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको बेडशीट चाहिए, तो बेडशीट के लिए अगर वो कहाँ से जाएगी? अगर उसको 2 लाख पीस लेना है, 1 लाख पीस लेना है, तो वो सीधे जेम पे जाके इस चीज को ऑर्डर प्लेस कर सकती है। तो गवर्नमेंट अब अभी के समय को देखते हुए अभी के जितने भी मार्केटिंग के एवेन्यूज है उसको भी एक्सप्लोर कर रही है साइड में। Okay, sir. Next, another question. What are steps taken by the government for the conservation of traditional textiles? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में जितने भी स्टेट है भारत के अंदर, हर स्टेट में हमारा एक ऑफिस है वीवर सर्विस सेंटर के नाम से।
तो वीवर सर्विस सेंटर में अब जब आते हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजंता मैम से कि अपने बच्चों को अगर ऐसे हैं तो लेके आइए। वहां पे हमने एक सेक्शन बनाया है डिजाइन रिसोर्स सेंटर, DRC, डिजाइन रिसोर्स सेंटर, जहाँ पे हमने इस स्टेट के जितने भी क्राफ्ट, जितने भी वैरायटी है टेक्सटाइल के, लाइक GI वैरायटी, नॉन GI वैरायटी, इक्कत, सिंगल इक्कत, डबल इक्कत, पाटा टेक्निक, और जितने भी तरह के टेक्सटाइल है उसको हमने यहाँ पे क्योंकि एक लाइब्रेरी बनाकर रखा है। और हमारे पास डिजाइनर्स है, टेक्निकल टीम है जो कि क्या करते हैं, उस पर R&D करती रहती है, रिसर्च करती है, नए नए उसको मतलब कि पुराने टेक्सटाइल को हम रिवाइव भी करते हैं, प्लस हम उसको नया रूप भी देते हैं। तो इस तरीके से आप इस सेंटर को यूज कर सकते हैं। तो हम तो एज ए सेंटर इस पे काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर स्टूडेंट है जो अगर PhD भी करना चाहता है टेक्सटाइल के ऊपर, और उड़ीसा मतलब कि किसी भी स्टेट के टेक्सटाइल के ऊपर आप करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो वो फर्म है, जो हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वीवर सर्विस सेंटर, वहां पे जाके आप इसकी पूरी मदद ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आपको कुछ सैम्पलिंग करवाना है, तो कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आपको 2 मीटर कपड़े के लिए कोई अपना पूरा सेटअप चेंज नहीं करेगा, और वो करेगा तो आपसे लाखों लाख रुपए चार्ज करेगा। लेकिन वो चीज हम बहुत ही नॉमिनल रेट पे करते हैं। हम एक सैंपल का 200-300 रुपए मात्र चार्ज करते हैं, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से सैंपल डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो हम तीनों डिसिप्लिन में काम करते हैं। अगर आपके कुछ आइडियाज है उसको हम डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम फैब्रिक में बदल सकते हैं, वीव कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ डाइस का आइडिया है उसको हम डाइंग कर सकते हैं, नेचुरल डाइस कर सकते हैं, या जो कपड़ा बनाने के लिए जितनी भी प्रक्रिया होती है उस सारे आयाम पे हम काम कर सकते हैं। तो इसमें हम अपने साइड से रिसर्च करते हैं। अगर आपका कोई रिसर्च टॉपिक है तो वो भी लेके आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एज ए कॉलेज भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी एरिया के को अडॉप्ट करके आप वहाँ के लैंग्वेजिंग क्राफ्ट को रिवाइव कर सकते हैं। And for this activity, the department can fund you as well as assist you technically. Okay, sir. Next question. What are the common types of damages in textiles restoration? देखिए, टेक्सटाइल रिस्टोरेशन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है कि टेक्सटाइल को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर जो एक लाइब्रेरी में जिस तरीके से हम उसको प्रिजर्व करते हैं, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, पीछे में लाइनिंग देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस पर रिस्टोरेशन का नॉलेज बहुत लोगों के पास होता भी नहीं है, अब बहुत लोग कर भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ना बहुत ही डेडिकेटेड सेंटर्स, जैसे कि अगर आप टेक्सटाइल लाइब्रेरी, अगर कोई स्टेट का टेक्सटाइल लाइब्रेरी जैसे कैलिको म्यूजियम है, तो नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल आर्काइव, इस टाइप के जो भी बड़े बड़े संस्था है उनके पास पूरी डेडिकेटेड टीम होती है इसको कंजर्व करने के लिए। सो इट इंक्लूड्स होल लॉट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। देन अगर कोई बहुत उसके पीछे अगर वो फट रहा है तो ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है। मतलब कि मुझे लगता है कि ये इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी लिमिटेड प्रोफेशनल एंड पर्सनल्स जो इस चीज में हैं और इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा चीज है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट यू टू द अदर रिसोर्सेज व्हिच वी हैव, लाइक इन दिल्ली हम लोग का हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है, व्हिच इज अगेन लुक आउट बाय डिफरेंट। तो इस चीज में हम उनसे कांटेक्ट करके आपको प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। Okay, sir. Sir, some questions to Sobharani ma'am also. Hello, ma'am. Can you hear me? Hello. Shobha, are you there? Hello. Sobha ma'am, unmute yourself. Unmute yourself. So, Sobha ma'am, unmute yourself. Yes. First question is, if patola and tie and dye are same, then why we call patola? See, patola is a tie and dye of yarn. All right, and tie and dye bandhani is a fabric. So when we tie dye the yarn according to the design of the fabric, we develop the khaka of it, we make a graph of it, and then we tie it. So the yarns are tied, not the fabric.
And bandhani is a technique where the fabric is tied and then dyed. So patola is something, patona is a resist yarn technique, resist yarn dye technique, and bandhani is a resist fabric technique. Okay, ma'am. I want to add, Shobha, one more point I want to add. In patola, it is a double ikat technique. In patola, the warp and the weft both are tied and dyed. So when you get the impression, so it will be very solid and it will be same from both the side. In patola, this is the peculiar thing in patola. अगर आप उड़ीसा इकत की और कहीं की इकत की बात करें, जो सिंगल इकत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, वहां पे क्या होगा ना कि आपको जो मोटिव जो बनेंगे ना, वहां पे मिक्स ऑफ वार्प एंड वेफ्ट कलर होगा. लेकिन पटोला में क्या होगा कि वार्प और वेफ्ट जो मिक्स करके जो डिजाइन बनाएंगे ना, वो सॉलिड कलर होगा, वो सेम होता है. तो उसमें जो आपका टाई डाई होता है ना पटोला में, वार्प भी टाई होता है और वेफ्ट भी टाई होता है, जिससे डबल इकत टेक्निक. लेकिन जो अदर इकत जो होता है, जो हमारा उड़ीसा का, वो सिंगल इकत ज्यादा प्रैक्टिस होता है. So this is also the one of the major difference. So there, here in India, we have 3 states which are involved in yarn tie and dye technique. Orissa being the one. In Orissa, we have both double ikat and single ikat, as Vikas said. Then we have Pochampalli ikat from Telangana, and we have Gujarat se patola, patan patola. So there are 3 states in India which does this same technique, where the motif direction is different, the colors are different, and the stories, the motif culture, the stories depicting different types of patterns, they are different in all the 3 states. Otherwise, the technique remains the same. I have a sample to show you. These are some of the tie-dye techniques. These are tie-dye techniques where the fabric has been tied and then dyed. So here, exact final fabrics, woven fabrics, they have been tied in different patterns and then it is dyed. So this is actually the bandhani technique. These are different types of techniques where we tie. So this is the bandhani technique, but in patola or the ikat which we say, the yarn is tied. Yarn ko hi alag se bandha jata hai, and then weaving is done, and the matching of design is done by manipulating the warp and weft yarns together. Okay, ma'am. Another question: how to differentiate between ikats of different states? The motif culture. See here in Orissa, we have ikats practiced in different regions. So here in Nuapatna area, we have single ikat, where we have only we see the cotton yarns. Yes, cotton yarns, cotton ikat is being done. Nuapatna ke bilkul paas mein hai Maniyaband village, wahan par. But in Nuapatna, all of us know that we have Khandua saris also, and we have very extravagant we can say the bandhni sambal, jise hum bolte hain ikat bandho, that is also being done in silk. All right, so basically the differentiation comes with the motif direction and the color ranges, along with the traditional importance of these saris. For example, we also have Bomkai saris. The techniques vary from region to region. Here in Barhampur area, Bomkai saris mein we use jala technique, whereas we use bandha technique along with the jacquard technique in Pargad area or the Sonpur areas. But in Maniyaband, we just have simple single ikat technique. Yes, and in Hyderabad or we say Telangana also similarly, Pochampalli mein there are single ikats, there are double ikats, and in Patola region also, as the work increases, number of repeats increases, the motif direction increases, the cost increases. So in order to bring this fabric to all classes of people, there is a variation in the sparsity of the motifs placement, and this is how the differentiation comes. सुबह और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको देख के पहचानना है तो उसमें अगर आप पोचमपल्ली जो आपका आंध्रा में जो होता है, वहाँ का जो मोटिव देखोगे ना, तो वो ज्योमेट्रिकल है ज्यादा. लेकिन अगर हमारा पटोला में मोटिव, लेकिन
बचनपल्ली में you will find pattern, सिर्फ ज्योमेट्री मिलेगा आपको वहाँ पे. So this is, आप देख के you can differentiate very easily. Okay, sir. How we can contribute individually to conserve traditional textiles? Please suggest. One set of traditional textile in each wardrobe is the most which we can see. Since, as I was already, sir has already introduced me, I have worked in the craft sectors for the last 13 years, and I have never purchased any mill-made fabric. In a year, maybe I can purchase only one, but that should be a traditional textile. So if we look for those kind of a approach to conserve the textiles, heritage textiles of India, I think that is the best part we can do. मैम वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप बुनकर से सामान खरीदे ना तो बार्गेन नहीं करें उनसे कभी भी बार्गेन न करें, क्योंकि एक साड़ी जो आप पहनते हैं उनको बनाने के लिए हैंडलूम में कम से कम 10 लोग लगते हैं. उनका जो धागा बनता है उसके लिए एक अलग सी महिलाएं होती है. अगर आप प्रोसेस देखेंगे जो स्पिनिंग का, जो जैसे मैम सुबह ने कुछ बताया आपको टसर सिल्क के वैरायटी के बारे में, गीचा, रील टसर, कटिया, तो ये सब आप देखोगे ना, इट इज सो पेनफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग. तो धागा बनाने के लिए एक अलग पीपल है, धागा डाई करने के लिए एक अलग है, प्रीलूम करने के लिए अलग सेट ऑफ पीपल है, वीविंग के लिए एक अलग है, फिनिशिंग के लिए एक अलग है. तो एक साड़ी जो आप पहनते हैं कम से कम 10 से 15 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो जब भी आप बुनकर से परचेज कर रहे हो, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुकान में बार्गेन करो, लेकिन जैसे आप कोई मेला में जाते हो, कामड़ा हाट पे जाते हो, वहां अगर बुनकर अगर माल बेचने आए ना तो उनसे नेगोशिएट कीजिए. दे डिजर्व दैट अमाउंट जो वो कोट करते हैं. Okay, sir. Yes, they put so much amount of time, their labor, along with so much of patience to come up with just one sari. There are patolas, which take months and months to create just one piece of sari. So this is how actually we are looking to preserve our traditional textiles. Thank you, sir and ma'am, for patiently and very vividly answering the questions. Now we will end the series now, and kindly join the tomorrow's session at 11 a.m. Thank you all. One last thing I want to tell all the participants, this is not the end of the session. All the participants who have joined this, they should come forward with good ideas, innovative ideas, and make use of the department or what we shared. It should not be just in slide कि आपने उसको स्लाइड में लेके पढ़ के छोड़ दिया. मैं चाहता हूं कि आप आगे आके इस चीज को प्रैक्टिस करें और इस चीज को आगे लेके जाएं. अगर 100-200 पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें से अगर 10 लोग भी इस ट्रेडिशन को आगे लेके जाते हैं, आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट. एंड मुझे लगता है कि ये फिर प्रेजेंटेशन जो सेशन रामा देवी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है, कि एक्चुअली में इट विल फाइंड इट्स मिशन एंड विजन. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much, sir. I must say that the presentation that you have given here, excellent presentations, sir, you have given, and the beautiful slides and with that amazing video that Sobha madam she has played. So this shows that this has been deep rooted, very well researched. I just felt like you both, you should go on and on. Thank you, sir. Thank you, madam, for giving us, for joining us today and spreading your knowledge and your experiences. We have thoroughly enjoyed it. And thank you so much, all the participants, esteemed participants, for your patience hearing and bearing with us the inconvenience caused in between. And we will meet tomorrow at the same time at 11 a.m. with another resource person. Till then, bye-bye and take care. I think we should end the session here. Thank you. Thank you so much.